Good morning, children. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So, children, in today's class, we are going to learn suffix. Okay? In today's class, we are going to learn suffix. So, children, do you know what is meant by suffix? Yes? Do you know, children, what is meant by suffix? So, children, a syllable or a word part. A syllable or a word part added to the end of a word is called suffix. Okay, so children, what is meant by suffix? Suffix means a syllable or a word part added to the end of a word is called suffix. So for example, children, let's see some example. Okay, here teach plus teacher, play plus full, playful, depend plus able, dependable, home plus less, homeless. So children are full, able, less. Yes, so these are prefix. Yes, children, these are suffix. Okay, are, full, able, less. Yes, these are suffix. So children, as we all know that a syllable or a word part added to the end of a word is called a suffix. Yes, children, so teach plus teacher. Yes, play plus full, playful, depend plus able, dependable, home plus less, homeless. Yes, children, so these are called suffix. Okay, so children, some suffix like able, less, etc. are words too. Yes, children, some suffix like able, less, etc. are words too. For example, here teacher, playful, dependable, homeless. Yes, children. So able means what? Able means is able to. Less means to be without. Full means to be full of. Means one who can. Yes, so children, a suffix changes the meaning of the word. Yes, a suffix changes the meaning of the word. So children, some antonyms are found by adding suffix to words. For example, here children see pain plus full is equal to painful. Yes, pain plus full इज इक्वल टू पेनफुल. यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले सफिक्स किसको बोलते हैं, जो एक वर्ड होता है उसके एंड पे हम क्या करते हैं, एक न्यू वर्ड ऐड करते हैं. ओके, जब हम वो न्यू वर्ड ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, एक न्यू वर्ड बन जाता है. जैसे अभी एक यहाँ पे एक पेन क्या है, एक वर्ड है. यस, तो जो एंड वर्ड है एंड उसके आगे हमने क्या किया है, फुल. यस, को ऐड किया है, तो उसके बाद एक न्यू वर्ड बन गया पेनफुल. यस, पेन प्लस फुल, पेनफुल. यस, तो एक वर्ड ऐड हो जाता है और एक न्यू वर्ड बनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं. सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. पेन प्लस लेस इज इक्वल टू पेनलेस. Yes, so children, suffix are added to the end of an existing word. For example, yes, suffix are added to the end of an existing word. Existing word में जो पहले से जो एक word होता है उसके आगे हम क्या करते हैं, कुछ new words या फिर नया word क्या करते हैं, हम वहाँ पे add करते हैं, तो उन दोनों को मिलाने के बाद एक न्यू वर्ड बन जाता है जिसको हम सफिक्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, चाइल्ड प्लस इश चाइल्डिश, वर्क प्लस वर्कर, टेस्ट प्लस लेस टेस्टलेस, आइडलाइज लाइकेबल. यस, सो चिल्ड्रन, हियर लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सफिक्स. ओके, सो चिल्ड्रन, ब्यूटी प्लस फुल ब्यूटीफुल, हेल्प प्लस फुल helpful, joy plus full joyful, great plus full grateful, useful, hopeful, dutiful, faithful, fruitful, thankful, handful, awful, thoughtful, cheerful, सक्सेसफुल. यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फुल 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 इस वर्ड को जो एग्जिस्टिंग वर्ड है उसके एंड में हमने क्या किया है, ऐड किया है. यस, तो जब हमने उसको ऐड किया तो एक न्यू वर्ड बन गया. यस, अ सफिक्स बन गया. यस, सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो काइंड प्लस नेस काइंडनेस,
bold plusness, boldness, aware plusness, awareness, good plusness, goodness, dark plusness, darkness, bright plusness, brightness, happy plusness, happiness, sharp plusness, sharpness, serious plusness, seriousness, sweetness, illness, foolishness, softness, weakness. Yes, so children, so let's see some more examples here. Neatness, thickness, fitness, dryness, bitterness, friendship, scholarship. Yes, then membership, partnership, hardship, ownership, captainship, relationship, लीडरशिप. यस, तो जो एग्जिस्टिंग वर्ड है उसमें हमने क्या किया है, एक न्यू वर्ड को ऐड किया है. जब हम किसी एग्जिस्टिंग वर्ड के एंड में हम कुछ न्यू वर्ड्स या फिर न्यू सिलेबल हम ऐड करते हैं तो तब क्या होता है, एक न्यू वर्ड बनता है. यस, जिसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. साइंटिस्ट, साइन प्लस ist is scientist. Yes, typist. Yes, socialist, dentist, realist, dramatist, typist. Yes, optimist, moralist, novelist. Yes, pessimist, philologist, activist, egoist, antagonist. Yes, egoist, antagonist, scientist, socialist, dentist, realist, dramatist, typist, optimist, moralist, novelist, pessimist, philologist, activist, egoist, antagonist. Yes, so children, today what we have learned, let's recall. So children, what we have learned, we have learned suffix. Yes, so children, we have learned that a syllable or a word part added to the end of a word is called a suffix. A syllable or a word part added to the end of a word is called a suffix. Yes, here we have also learned some examples. Yes, so यहाँ पे हमने कुछ examples भी देखा. Yes, for example, teacher, playful, dependable, homeless. Yes, then we have learned that a suffix changes the meaning of the word. Yes, so some antonyms are formed by adding suffix to words. So children, here like painful, painless. Yes, so suffix are added to the end of an existing word. Yes, for example, here children, childish, worker, taste, idle, like. So here is, h-ish, earth, less, lies, eyes, able, ये क्या है, suffix है. Yes, यहाँ पे हमने देखा ये जो फुल है, ये क्या है, सफिक्स है. यस, एग्जिस्टिंग वर्ड में हमने एक न्यू वर्ड ऐड किया है. यस, सो हियर ब्यूटीफुल, फुल, हेल्पफुल, जॉयफुल, ग्रेटफुल. यस, सो चिल्ड्रन, द फुल इज अ सफिक्स. यस, तो हमने वहाँ पे क्या किया है, एक एग्जिस्टिंग वर्ड में एक न्यू वर्ड ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाया है. यस, सो हियर चिल्ड्रन, kindness, boldness, awareness, goodness, darkness, brightness. Yes, then neatness, friendship, ownership, thickness, scholarship, captainship, fitness. Yes, membership, relationship, dryness, partnership, leadership, bitterness, hardship. Then scientist, socialist, dentist, realist, dramatist, typist, optimist, moralist, novelist, pessimist. Yes, okay, so children, so we have learned suffix. Yes, so children, in today's class we have learned suffix. So children, in the next class we will learn prefix. Okay, in the next class we will learn prefix. So children, suffix are added to the end of an existing word. Yes, so children, here we have learned with the examples. Yes, so children, in the next class we will learn prefix. Okay, so children, till then, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.